Hello and welcome to Bhaduri Foundation. Let's continue our lecture on Manufacturing Industries, Chapter 6, Class 10 NCERT. On the basis of source of raw material के basis पे used in the industry, industries are categorized as agro-based industry, मतलब जिसमें प्रोडक्शन होता है कॉटन का, वूलन, जूट, सिल्क, टेक्सटाइल, रबर, शुगर, टी, कॉफ़ी, एडिबल ऑयल. Mineral based industries produced iron and steel, cement, aluminium, machine tools, petrochemicals according to their main role. Basic or key industries are those which supply their products as raw materials to manufacturing other goods, example iron, steel and copper smelting, aluminium smelting. Consumer industries that produce goods for direct use by consumers, sugar, toothpaste, paper, sewing machine, fans, etc. on the basis of capital investment. For small industry at present, the maximum investment allowed is rupees 1 crore. On the basis of ownership, public sector owned and operated by government agencies like BHEL and SAIL. Bharat Heavy Electricals Limited and Steel Authority of India Limited is the full form of BHEL and SAIL. Private sector industries owned and operated by individuals or a group of individuals like Tisco, Bajaj Auto Limited, Dabur Industry. The joint sector industries are jointly run by the state and individuals or a group of individuals. Oil India Limited, example. Cooperative sector industries are owned and operated by the producers or suppliers of raw materials, workers or both. Based on the bulk and weight of raw material and finished goods, heavy industries such as iron and steel, light industries that use light raw material and produce light goods such as electrical goods industries. Agro-based industries जिसमें कॉटन, जूट, सिल्क, वूलन, टेक्सटाइल, शुगर एंड एडिबल ऑयल एटसेट्रा होता है. इंडस्ट्रीज आर बेस्ड ऑन एग्रीकल्चरल रॉ मटेरियल. If we talk about textile industry, it contributes significantly to industrial production, employment generation and foreign exchange earnings. It is the only industry in the country which is self-reliant and complete in the value chain. Self-reliant मतलब अपने आप ही raw material और last line of production तक जा सकती है textile industry. Cotton textile in ancient India, cotton textile were produced with hand spinning and handloom weaving techniques. After the 18th century, power looms came into use. 18th century के बाद power looms मशीन आ गई. जो चरखा होता था उसका सब्सटीट्यूट आ गया in England. Our traditional industry suffered a setback. तो इससे हमारी जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्री थी चरखा सूत काटने के लिए उसको एक बहुत ही झटका लगा ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड बिकॉज दे कुड नॉट कम्पीट विद द मिल मेड क्लॉथ फ्रॉम इंग्लैंड. तो जो मिल मेड प्रोडक्शन आ रहा था इंग्लैंड से उसके कंपटीशन में उसको एडवर्स इफेक्ट हुए. द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल वाज एस्टैब्लिश्ड इन मुंबई इन 1854. अवेलेबिलिटी ऑफ raw cotton, market transport including accessible port facilities, labor, moist climate etc. contributed towards its localization. तो रॉ मटेरियल जो होता है उसके लोकलाइजेशन के लिए मतलब एक रिस्पॉन्सिबल है इंडस्ट्री की. इंडिया हैज़ वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन इन स्पिनिंग. वर्ल्ड क्लास प्रोडक्शन करता है स्पिनिंग में, हैंडस्पन में, खादी में. प्रोवाइड्स लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट टू वीवर्स इन देयर होम्स एज ए कॉटेज इंडस्ट्री. तो लोगों को घर पे बैठ के ही काम मिलता है कॉटेज इंडस्ट्री में. किसमें? स्पिनिंग और हैंडस्पून खादी में. इंडिया एक्सपोर्ट यर्न टू जापान. यर्न का इतना प्रोडक्शन है कि जापान को भी एक्सपोर्ट करती है इंडिया. आवर स्पिनिंग मिल्स आर कॉम्पिटिटिव एट द ग्लोबल लेवल एंड कैपेबल ऑफ यूजिंग ऑल द फाइबर्स वी प्रोड्यूस. Although we have made significant increase in the production of good quality long staple food, the need to import is still felt. Power supply is erratic and machine ये problem है. Power supply continuous नहीं रहती, erratic रहती है. And machine needs to be upgraded in the weaving. तो मशीनों को अपग्रेड करने की जरूरत है वीविंग के प्रोसेसिंग सेक्टर इन पर्टिकुलर. अदर प्रॉब्लम्स आर द लो आउटपुट ऑफ लेबर की जो आउटपुट है वो कम है. एंड स्टिफ कॉम्पिटिशन विद द सिंथेटिक फाइबर से स्टिफ कॉम्पिटिशन है. To continue this lecture, subscribe our channel on YouTube and download our app bhadurifoundation.com. You will get all lectures at one place there and PDF of this lecture too. Thank you.